Listen, students, 172 page policy of non-alignment. Non-alignment is one of the most significant principles of Indian foreign policy. When India gained independence, the world was divided into rival camps headed by two superpowers, namely USA and Soviet Union. Second World War ପରେ ଦୁଇଟା ହିଁ ବ୍ଲକ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଏସଏ ର ବ୍ଲକ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ କେମିତି ସୁପର ପାୱାର ହେବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, କୋଉ ପକ୍ଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଥିଲା ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ବୋଥ ଦି ସୁପର ପାୱାର୍ସ ୱେଆର ବିଜି ଇନ ଫର୍ମିଂ ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। କେମିତି କଣ ମିଲିଟାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର୍ମେସନ କରିବେ? During the tension-ridden period, India thought it proper to keep away from the power blocks and adopted the policy of non-alignment. India adopted the policy of non-alignment in the international relations. International relations, the policy of non-alignment, India adopted. The non-alignment is not neutrality. The term non-alignment negative means keeping aloof from power politics and not joining military or security blocks. ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर मिले समझते जाएंगे अमेरिका और सोवियत रशिया रा जो ब्लॉक नहीं पावर ब्लॉक ता अंडर रही नहीं, किंतु नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीब्यूटर रहिले से माने चाहिए कौन नॉट टू इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ पावर ब्लॉक्स। कौन से प्रकार पावर ब्लॉक अंडर रहे नहीं तो इंटरनेशनल अफेयर्स इज कंसर्न। Positively, it implies pursuing independent foreign policy and playing active and positive role in international affairs to achieve peace and prosperity. International level में peace और prosperity केमती हासिल करायची को वेगवेगळ्या main object का non-alignment. आम्ही त्याला उडिया रे कोणते क्वेश्चन दिले होते. Since independence, India has been following the policy of non-alignment in the conduct of her foreign relations with the other countries of the world. India as a state remained away from power politics and played a positive role in securing friendship and cooperation with the foreigners. India समस्तଙ୍କ ସହିତ ଚାହିଁଲା friendship ଆଉ cooperation establishment କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କଣ କଲା ତାକୁ ଫର୍ମୁଲେଟ କଲା इंटरनेशनल लेवल रे ଗୋଟେ स्पेसिफिक पोजीशन। इंटरनेशनल लेवल रे इंडिया रो ଗୋଟେ स्पेसिफिक पोजीशन अछि, कारण से ना सोवियत यूनियन अलाइड रो अछि ना अमेरिका अलाइड रो अछि। ये सब बड़े न्यूट्रलिटी मेंटेन करिछि, ओडिया रे पड़ी जे कोन गोष्ठी निरपेक्ष करिछि। एवं जो गोष्ठी रे कोन ना केबे पावर ब्लॉक रो मेंबर माने रहिबेनी, जो ब्लॉक रो रहिबो कोन नॉन पावर ब्लॉक। So not only India has been pursuing, since independence, India has been following the policy of non-alignment in conduct of our foreign relations with the other countries. India as a state remained away from power politics and played a positive role in securing friendship and cooperation with the whole nation. Sabu nation manako saita friendship and cooperation establishment. India not only has been consistently following the principle of non-alignment, but also it has played a significant role in launching non-alignment movement at Belgrade Conference held in 1961. The non-alignment movement ना परमिशन आइतिला केबे ना बेलग्रेड रे गुडे कॉन्फ्रेंस आइतिला एवं से परमिशन आइतिला 1961. Non-alignment principle has helped India to secure its goal and national interest. This policy also helped India to play a vital role in international affairs. यही पॉलिसी पर non-alignment जोगु non-alignment movement जोगु इंडिया को significant position पाइछि in international affairs. अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र मानक मध्य रे गुडे significant position आइछि।
Peaceful coexistence and cooperation. Peaceful coexistence is another important character of Indian foreign policy. Since independence, India has firmly adhered to the principle of a peaceful coexistence and mutual cooperation among nations. For the purpose, the principle of a Panchashil was initiated by India in the specific form in Indian Treaty in 1954. Since then, Panchashil principles have become a symbol of India's view approaches in world affairs. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲେ peaceful coexistence and cooperation ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା 1954 ରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଗୋଟେ କାର୍ଡିନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କେମିତି ପିସଫୁଲ କୋଅପରେସନ ଦେଖିବେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଯେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ that is the main objective of these five cardinal principles. First, mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. प्रत्येक राष्ट्र निज राष्ट्र ऐक्यता बजाय रखिब आउ विदेशी राष्ट्र सवरणताको कौन कर सम्मान सेकेंड नॉन एग्रेशन को राष्ट्र ऊपर तुम प्रथम आक्रमण कर थर्ड नॉन इंटरवेंशन इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स केही कहार आभ्यंतरीण व्यापार रे केबे हस्तक्षेप करिबनी आभ्यंतरीण अफेयर अर्थात तुम जानिथिबो इंडिया रो इंटरनल अफेयर रे पाकिस्तान के पाकिस्तान इंटरनल अफेयर रे इंडिया इंटरफेयर करिबो नाही तापरे पिला आसीगला म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इक्वालिटी प्रत्येक राष्ट्र निजे निजर बेनिफिट कथा चिंता करिवे और समान मध्यम करिवे सम्मान देबे पीसफुल कोएक्सिस्टेंस शांतिपूर्ण भाव रे केमिति कोन संरक्षण करि परिबे सेटा मध्यता It was in the spirit of peaceful coexistence and cooperation that India laid great emphasis on the settlement of disputes peacefully. ये पंचशील एग्रीमेंट को बेस करी इंडिया बहुत जगह कोन करते डेजिग्नेटेड सस्टेनेबल पॉलिटिकल अर्थात गोटे राष्ट्र जो आउ गोटे राष्ट्र सहित युद्ध करने चाहूचे ये जो राजीनामा देखला परे राजीनामा कार्डिनल प्रिंसिपल पढ़िला परे जानिला परे गोटे राष्ट्र आउ गोटे राष्ट्र ऊपर आउ प्रतिहिंसा सपोर्ट फॉर यूएन United Nations. India, as a proponent of peace, has shown great faith in United Nations. It has not only encouraged the settlement of disputes through peaceful method, but also extended full support to the United Nations action at the world level. खाली मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा करदेले हबनी मिलित जातिसंघर नीति नियम को मानिया को पड़िबो देखुथिबो वर्तमान मिलित जातिसंघ को के पचारने इजराइल हमास रो ईरान रो चाइना युद्ध मिलित जातिसंघ एक्टिविटीज के पसंद करना तम डायलॉग के पसंद करना के पसंद यूक्रेन रशिया रे चली छी सेति मिलित जातिसंघ मते इनेक्टिव होबा पड़े तनो पहले यूनाइटेड नेशंस एट द वर्ल्ड लेवल रही मध्य में सपोर्ट करवा दरकार इंडिया हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग मिलिटरी एंड पर्सनल सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस डिसीजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस preserving peace and security at the international level. India, since its independence, has been using the United Nations Forum to criticize the policy of imperialism, colonialism, neocolonialism. Imperialism अर्थात साम्राज्यवाद जो राष्ट्र साम्राज्यवाद पॉलिसी की पसंद करिवो इंडिया ताको पसंद करेना वर्ल्ड लेवल तमे बतिबो चाइना गोटे राष्ट्र से सब बेले साम्राज्यवाद प्रतिष्ठा करिया की चाहूबी अर्थात मु मो टेरिटरी की बड़ा करिवि मु मो भूखंड को बड़ा करिवि एटा चेष्टा इंडिया से बड़ी नीति की पसंद करेना आ गोटे रहछि कॉलोनियलिज्म उपनिवेश स्थापन करिबा उपनिवेश स्थापन करिबा अर्थात कोन कोनसी गोटे कंट्री के आ निज अंडर को आनिबा प्रथमे कोनसी कंपनी अंडर रे जीवा एस्टैब्लिशमेंट प्रतिष्ठा करिबा तापर टोटली राष्ट्रटा को कन्वर्ट करिबा and न्यू कॉलोनियलिज्म हमें जति देखिबा जदि उपनिवेशवाद आगो भलिया नाही किंतु नुवा नुवा उपनिवेश मते प्रतिष्ठा हलानी कारण तुमे जानुथिबो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି କଲୋନିଆଲିଜିମ ର ତାପରେ ପିଲେ it has been helping the UN effort in the direction of arms control disarmament with a view to strengthening the UN
Presently, Indian foreign policy focuses on the expansion and democratization of the world. Indiaର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନ୍ ପଲିସି କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି ନା to strengthen the UN, United Nations ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବା and presently India's foreign policy focuses on expansion and democratization of world forum. ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବନା ଆସୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନା ଆସୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାରଣ ଯେ particularly Indian foreign policy. Friendly relations with the neighboring states. India's foreign policy advocates for developing friendship relationship with the other countries, particularly in respect to its neighbors. India has held very close relations and tried to promote unity among them by organizing a number of conferences. India has tried its best to solve all its bilateral problems with China. Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh in a amicable manner. India has also been committed to develop socio-economic, political, and cultural relationship with our neighboring countries on the basis of sovereignty, equality, and mutual benefits. To augment good neighboring relationship and to foster rapid socio-economic development, South Asian region. India took a lead role in the formation of a South Asian Association for Regional Cooperation in 1995. So these are the actually commitments given by India for international peace, good coexistence. That is Bureau of the Bureau. Okay. Permission to start.
or regional cooperation. History का change correction कर दिया क्या देखिए तो foundation 8th December 1985 8th December 1985 देखो बहुत मिस्टेक है से तब देखला पड़े बहुत सारे डाउट है जो टेक्निकल 8th December 1985 नेक्स्ट क्या कर दो बोलते हैं opposition to discriminatory policy. Since its birth, India has all along been opposing to discriminatory policies at the international level. India always opposed the policy of domination by some states in international system. It has refused to sign the nuclear non-proliferation treaty in 1970 and continues to remain a non-signatory till today because India regards this treaty as discriminatory, unjust and unequal. जो एनपीटी रहेगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିବେନି କୋଉମାନେ ନା ବିଗ୍ ଫାଇଭ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡିଓ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ନନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ କଣ କବିତାରେ ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଜିସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିମ୍ବା କୌଣସି ମିସାଇଲ ଗୁଡାକ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା କଥା ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବ ଅଲ୍ ଟୁ वर्ल्ड सब राष्ट्र माने सेक्रेटरी जेहेतु चाइना साइन करलानी एवं पर्टिकुलरली इंडिया रो नेबरिंग कंट्री तापर पर इंडिया कोनला एक्सपेल हेगला इंडिया सेक्रेटरी सिग्नेटरी हिसाब साइन करला तो एनपीटी टा केबे सेटा भी कमिटमेंट को परफॉर्म करिया पे then likewise India has been opposing the comprehensive treatment treaty activity as unjust treaty which seeks to legitimate the nuclear superiority of the nuclear powers. Even after conducting nuclear tests in 1995, India continues to support the need for a total nuclear disarmament and arms control of its territory. जदि हार्मोनी न रहिबो ताले कोनसी कंट्री पाखरे न रहिबो भल किसिटा कंट्री पाखरे आर्म्स रहिबो किसिटा कंट्री पाखरे रहिबोनी एटा टोटली डिस्क्रिमिनेट इंडिया रो उद्देश्य ठीक जे जदि न रहिबो राष्ट्र कोनसी राष्ट्र पाखरे दूरगामी क्षेपणास्त्र न रहो तुम निज सॉवरेनिटी मेंटेन करियो तमे रख तमर अस्त्र तमे कहीं टार्गेट कर रखो इस्लामाबाद पई कि वाशिंगटन पई कि हमर मॉस्को पई एगुडा तो एते लॉन्ग टर्म मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल तक एक्चुअली पोजीशन में रखिबा अनुचित सो even after conducting nuclear test in 1995 India continues to support the need for total nuclear disarmament and arms control without discrimination बिना कोई विभिन्नता रे discrimination means differences रे कौन सी प्रकार हमें जहां ही करियो सब राष्ट्र पे गोटे प्रकार यूज करिया हो गोटे प्रकार कंट्रोल आ गोटे स्पेसिफिक पार्शियली गोटे राष्ट्र पे फॉर्मुलेट करबा और में से गोटे प्रिंसिपल रखिबानी इट इज नॉट एप्लीकेबल emphasis on means another notable feature of Indian foreign policy is that it always lays emphasis on the purity of the means. It has consistently held that the means for the attainment of national interest must be noble. India has always nourished very high ideas and never aspired to acquire territory of others. देखो पहले emphasis on means हमरो यदि रिजल्ट हमें पाइबा अधिकांश लोग सपोर्ट करते कोन ना पर्टिकुलरली जे गोटे रिजल्ट रे गोटे तू कामटा गल जेतबे रिजल्ट गल अधिकांश कहते गोटे रिजल्ट भल हवा पहले माध्यमटा भल हवा दरकार मीन्स भल हवा दरकार तेणु एठी रही कि एम्फासिस ऑन मीन्स माध्यम ऊपर हमें जे एम्फासिस करतन अधिकार another notable feature of Indian foreign policy is that it follows the emphasis on purity.
It has consistently pulled that the means for the attainment of a national interest must be noted. That plus national interest का समझते implement करेंगे सरकार. India has always nourished very high ideas and labor aspects to acquire territory of others. Alternative national territory acquire करने का India के लिए. Solution to new problem. Presently, the world is passing through. Suddenly, presently, the world is passing through certain new crises. There are terrorism, environmental pollution, climate change, economic crisis, poverty, malnutrition, and the fear of a nuclear holocaust. Keeping the needs and problems of the changing international atmosphere, India's foreign policy has been reoriented to solve these new problems. India foreign policy has been trying to eliminate the problem of international terrorism, eradicate poverty and malnutrition, and protect the rights and the interests of the developing countries, meet the challenges posed by the environmental pollution, climate change, and strengthen cooperation amongst the world countries. India ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି world ର maximum problem ଟାକୁ solve କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ solve ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଯାଇ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି ଭଲକିରି ପାଠ ପଢିବି ଏବେ ବଚେର वो बोलते कोई नहीं जब बारिश होगा लाइट कट जाएगा पानी नहीं मिलेगा तुम सब क्या करेंगे बहुत जाएंगे फिर रह जाएंगे कैसे बिस्कुट बिस्कुट तो परचेज कर लिए खाना पीना हाँ फिर भी हॉस्टल में टोटल कितना बचे लोग हैं 7 तुम्हारा 2 9 तुम एक हॉस्टल बना दो 7 + 2 = 9 लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर आते थे आप लोग बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं ना जार जार ड्रिंकिंग वाटर लेकर धूप जाते हैं तुम्हारा कैंपस के अंदर तुम्हारे कैंपस में तो ठंडा चलेगा कितना बचे लोग ऑनलाइन में है 4-5 रह गए मैं सोच रहा हूँ वही नहीं टाइप है टाइप बच्चे लोग पढ़ाई सुनते हैं तो वो टाइप जो होते हैं वो कितो पावर वाले अमेरिका रूसिया चाइना ब्रिटेन फ्रांस ठीक है देखो पहले सॉल्यूशन टू न्यू प्रॉब्लम इंडिया जो रही फॉरेन पॉलिसी इंडिया चाहती वर्ल्ड ओवर जो न्यू प्रॉब्लम सब आसछि कौन प्रॉब्लम टेररिज्म संतरासवाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिकल क्राइसिस पॉवर्टी malnutrition मतलब जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीनियस फूड होते हैं उनको सब इनवाइट करते हैं इनवाइट करने के लिए पॉलिसी देते हैं उनके बाद देखिए एंड फियर ऑफ अ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट वर्ल्ड ओवर बर्तमान जदि गोटे राष्ट्र आ गोटे राष्ट्र फाइटिंग करूची जे न्यूक्लियर पोजीशन वाला जे कहूची एटम बम के उड़ेई दे धूली कर दे आगे से ये वर्क का कहूची तेणु जो न्यूक्लियर पोजीशन कंट्री गुटे सब रहिले
पकई पारे भी भय लगुच सी जी पकड़े अलग अलग पकईदेव विश्व कौन है टोटाली जनशून्य मनुष्य दिन हो तेणु समस्त पाखे अच्छी न्यूक्लियर बम इज्राएल पाखे न्यूक्लियर बम नहीं अच्छी किंतु पकौनी कहीं हमास ईरान से जानी टोटाली ह्यूमन आनिलेशन कर सोवियत रशिया पाखे कौन नहीं आटम बम अच्छी बहुत सी कहीं पकौनी सी पकड़े मैंने जानती मुझे पकईदेवी सपोर्टर अच्छे अमेरिका से जो पकईदेव आमर बर्तमान इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी रो किछ मेजर रोल रही फर्स्ट टेररिज्म एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक क्राइसिस पॉवर्टी malnutrition and fear of a nuclear keeping the needs and problems of the changing international atmosphere Indian foreign policy has been oriented to solve these new problems India होती एक new problem हमें कमिटी को सॉल्व करिबा India presently Indian foreign policy has been trying to eliminate the problems of international terrorism, eradicate poverty and malnutrition, protect the rights and the interests of the developing countries to meet the challenges posed by environmental pollution, climate change, and strengthen cooperation among the third world countries. America and its allied in the first world, Soviet Russia and its allied in the second world, Asia, Africa, Latin America, ये सब वाले fourth world, third world, एवं fourth world को ना उसे कहा ना OPEC countries, oil and petroleum exporting countries, तब fourth world वाली consider करा गया. These are the basic principles of Indian foreign policy, which has been guiding the policy makers to establish and maintain its relations with the other countries of the world. Some of the principles are old and others are new. However, all are important in the process of formulating foreign policy. तो भारत जो वैदेशिक नीति प्रणाली करिछि से वैदेशिक नीतिर मुख्य भूमिका हला कोन ए जो गुडा करौछि हमर एलिमिनेशन करबा काहाकू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म eradicate poverty and malnutrition protect the rights of the interest of the developing countries to meet the challenges posed by environmental pollution climate change and cooperation among the third world countries. These are the basic principles of Indian foreign policy which has been guiding the policy makers to establish and maintain its relationship with the other countries of the world. Some of the principles are old and others are new. However, all are important in the process of formulating India's foreign policy. भारत और वैदेशिक नीति प्रणाली में एगुड़ा नियमित जरूरी है. ताले देखिबा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री भारत तार पड़ोसी राष्ट्र मानक सहित कोन केमति संपर्क रखिछि. India is the world's second populous country. It is situated in South Asia. It is bounded by many neighboring states like China, Pakistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, etc. In neighboring country ମାନଙ୍କ सहित India किसी ना किसी कोन पर relationship establishment करछि. It has always tried its level best to keep friendly relations with the neighbors. From among these countries, India's relationship with China and Pakistan is highly interesting because there are three countries. These three countries are the nuclear power of Asia. बोले तुम्हें जाने की बात इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी जो है वैदेशिक नीति से वैदेशिक नीति का बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान एवं पाकिस्तान में वैदेशिक नीति इंडिया को भल लगे ताले हमें देखिबा जेमती इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पई बड़े बड़े सपोर्ट दिएनी तो इंडिया रो फॉरेन नीति बड़े बड़े चाइना को भी सपोर्ट दिए तेणु पाकिस्तान रे जो प्रिंसिपल में शासन चली सेटा थियोक्रेसी धर्म को बेस करी कुरान को बेस करी शासन चली किंतु चाइना रे जो शासन चली एटा कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी तेणु इंडिया रे जो शासन है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तेणु इंडिया रे शासन से डेटा फिर भी हमें देखिबा जेतु इंडिया पाकिस्तान चाइना केतेक एशियाटिक कंट्री एवं समस्त पाखे न्यूक्लियर पोजिशन अछि तो केमिति India, but China-India relations. The relationship between India and China is also known as Sino-Indian relations or Indo-China relations. The relationship between India and China has never been static. India and China relationship is very serious.
सब बड़े गोटे प्रकार प्रिंसिपल को बेस करी चलेनी although both the countries have tried to maximize their friendly relation yet occasional conflicts in the borders have sometimes worsened this situation. ସବୁ कंट्री रो ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ कंट्री ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ कंट्री ଉପରେ ଅକୁପାଇ କରେ ତାର ନ୍ୟାଶନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ପॉलिसी डिजॉर्डर ହେଇଯାଏ ଫରେନ୍ ପॉलिसी କଣ ହୁଏ ନା ବ୍ରେକଡାଉन ହେଇଯାଏ historically India has a cultural tie with China since last 2000. Chinese pilgrim Haiyan and Winston have visited India. Buddhism spread to China from India, but modern ties with China really started from 1950 only. Mao Zedong captured China by overthrowing the ruling dynasty in 1949. Through a revolution and established a communist government in China, India gave formal recognition to the communist region in 1950 and established trade relationship with China. देखा पहले इंडिया चाइना रिलेशनशिप अल्पदिन रिलेशनशिप में दीर्घदिन रिलेशनशिप ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଇନାର ଯୋଉ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ହାଇଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱେନସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ନାଲନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲା to gain knowledge from the Asiatic culture but